नशीली दवाओं के खिलाफ एक बड़े अभियान में असम पुलिस ने गुवाहाटी में बड़ी मात्रा में जब्त की गई प्रतिबंधित दवाओं को नष्ट कर दिया। नष्ट की गई दवाओं में ब्राउन शुगर के साथ साथ लगभग 20,000 यूनिट कफ सिरप की बोतलें, 31 किलोग्राम गांजा और 7 किलोग्राम से अधिक हेरोइन को नष्ट कर दिया है। इन्हें हाल ही के दिनों में विभिन्न छापों और जब्ती के माध्यम से जमा किया गया था। वहीं मौके पर एंटी ड्रग्स विनाश अभियान चलाया गया, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ड्रग्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। Today, Narcotic Control Bureau, Government of India, is organizing their regional conference in Delhi, and in connection with the regional conference, all over the country, the NCB has organized disposal of drugs, the seized contrabands. So, in connection with that conference, Assam Police is also going ahead with the disposal program of the seized contrabands. So today, Police Commissioner at Guwahati is disposing different kinds of contrabands which we have seized in connection with different cases. I'll just list out the details of the disposal. The Ganja, today it will be around 3,100 kg. Heroin, more than 7 kg. Tablets, around 2 lakhs tablets of different kinds. Yaba tablets, then other banned tablets. Then the raw materials for brown sugar, it's around 800 grams. Then the brown sugar is around 16 kg. Then the cough syrup bottles, you can see it's being destroyed there. It's around 20,000 bottles. वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ समन्वय में देश के विभिन्न हिस्सों में 2,416 करोड़ रुपए की 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।